Hello, everyone. Let people join in. Hello, everyone. Hi. Hello, everyone. Let people join in. Then we can start. Hello. को कोई बता सकता है कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो. Hello, everyone. Let's people join in. Then we can start. Hello. So, the agenda of this live is that today, hello, share this live with your friends or with your family because today, hello, it's people wait for around 2 to 3 minutes, then we can start. Hello, thank you for telling me that I am audible. Yes, people are joining in. So basically, the agenda of this live is that many new subscribers are added to my channel. So I want to welcome them personally because as a creator, it's my duty that those who are supporting me, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए. So this is the basically just to thank you, just to tell everyone that
I am super grateful. Now we are a family of 1072, and every day we kept on increasing. So for that, and some people are new, some people are old, but together we are a community of Talk Data with Jen. And I am super grateful for you all. And even nowadays, I get a question that is pretty much common with so many people, so many freshers, or even with working professional also, even for me as well. So I will address that question as well. So let people join in, and you can share this live with your friends, or those who are studying with you, or those who are in data AI, so that it can reach to the wider audience. And today I want to tell you a very important workshop which you डोंट वांट टू मिस, बिकॉज मैं खुद भी उस वर्कशॉप को अटेंड कर रही हूँ, और ये वर्कशॉप एक फ्री वर्कशॉप है. इट्स नॉट अ पेड वर्कशॉप, जस्ट यू हैव टू शो अप एंड यू हैव टू लर्न. तो इसलिए this session will be helpful for you, and we will be taking up questions as well. If you have any question related to data AI in journal, like what I do, what my channel is, so you can drop in the comments section, in the chat section, and more, like many. And even there is a kind of new thing, or I would say new, um I don't have a word right now to say, मतलब एक नई चीज मुझे जो देखने के लिए मिली है, that also I will be telling you. So let people, okay, people are joining in. Hello, hello, welcome everyone. Hello. If you have any question related to data, AI, in journal, anything, like which domain should we join in, or what kind of uh, hiring for which tech role is going on right now, you can ask question related to that. As well as, don't forget to watch this live or stay in this live, because I will be telling you about one workshop as well, which is completely free, and it's not a random workshop, because I will be also joining that. And it will help you, because nowadays every day you see a advancement in AI. और हम जैसे ही लिंक्डइन खोलते हैं, या फिर अगर हम कुछ भी है, अब तो न्यूज में भी इतना सब AI के बारे में. तो that this workshop will really help you in terms of, with the help of AI, how you can create PPT, how you can create journal, kind of analysis if you want to do, or some kind of automation work if you want to do. So this workshop I will be telling you about. So मिस मत करना. सबसे पहली बात तो फ्री है, और क्या कहते हैं, फ्री वर्कशॉप्स राइट नाउ इट्स वेरी मच हार्ड टू फाइंड. और ऐसा नहीं है कि जस्ट रैंडम है या कोई 9 रुपीज 10 रुपीज है. उसके बाद इट विल बी इट, एंड दिस वर्कशॉप इज अराउंड क्लाउड, क्योंकि क्लाउड हम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है. तो हाउ विद द हेल्प ऑफ cloud you can make certain ppts, certain automation work, or even kind of simple repetitive task, how you can do with the help of Claude. So this workshop is free, and this workshop is on Saturday. I will be dropping off all the details about this workshop in my channel, so stay tuned for that. And yes, if you want to join this workshop, just let me know. Just ask me or DM me on my WhatsApp channel, or on my LinkedIn, or on my WhatsApp, or even you can write in this live session also, like, I want the link. So I'll share that workshop. Okay, hello, hello. Any questions related to data, AI? And yesterday I went to a tech event, so that kind of video, or you can say in content word, a blog will be live soon on my channel.
तो इस लाइव सेशन के बाद दैट वीडियो यू विल बी सीइंग ऑन माय चैनल, तो वो देख लेना जाके. Basically what kind of workshop we did in this tech event, what kind of panel discussion we had in this session, or even what kind of new AI technologies are coming. So all I have curated for you. So after this live, just watch that video that will give you a just like what happens exactly in tech events. Hello everyone. जल्दी जल्दी लाइव शेयर कर दो, इससे कि अगर किसी को एक फ्री वर्कशॉप करनी है तो दे दैट पर्सन कैन डू दैट फ्री वर्कशॉप, और इवन आई विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग दैट वर्कशॉप. तो इफ यू वांट द डिटेल्स ऑफ दैट वर्कशॉप लिंक, सो यू कैन comment. That is happening on Saturday 8 p.m. That is free, and in that you will be learning about how to make presentation through cloud, how to make how to do automation work through cloud, or even some repetitive tasks through cloud. So that will really help you, because अगर आप content creation करते हो, या फिर अगर आप कुछ kind of कुछ research करते हो, या आप एक deck present करते हो, तो वो आप उससे सीख सकते हो. So that workshop will really help you. Hello. I hope I am audible completely. Hello, everyone. Yes. And yes, yesterday I met so many people, those whom I have connected through LinkedIn. So काफी लोगों से मैं मिली भी, और एक जेन्युइन, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर किसी से मिल रहे हो या फिर अगर आप लिंक्डइन में बात कर रहे हो, तो जब आप उनसे पर्सनल मिलते हो ना, आपको एकदम पर्सनल टच लगता है, क्योंकि आपने ऐसा नेटवर्किंग काइंड ऑफ थिंग और एंगेजमेंट क्रिएट करते हो आप, तो आपको लगता है कि हाँ, दीज kind of thing, connections which you are building over LinkedIn, that are not fake, that are, and that is not specifically related to job only, कि अगर हमने LinkedIn पे से connection बनाया तो हमको job ही चाहिए. Even I have met today, yesterday, for the very first time, my LinkedIn connections in person, and they were very sweet, very supportive. And even people are literally so much supportive of my YouTube channel. Like they used to push me, like do this, do that. And even if अगर आप मेरी audience काफी अगर मुझे follow करते हो, तो आपको पता होगा मैं अभी Google Cloud Summit में भी गई थी. वहां पे भी I had a very nice event, and all the stuff which I have done there. So I have posted that on my YouTube channel. So you can go and watch it out. Or just comment what is the best part in that you liked, or what more you want to see on my channel. So that can help you. That can give me a feedback as well. Hello. Thank you. और इन जनरल भी अगर आप किसी बारे में बात करना चाहते हो रिलेटेड टू टेक, डेटा, एआई, और इन जनरल व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वी शुड लर्न मूविंग फॉरवर्ड, और अगर कोई टेक इवेंट आसपास हो रहा है तो यू शुड जॉइन, और नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो और आपको लग रहा है कि मैं उस टेक इवेंट में जाके क्या ही करूंगा, क्या ही करूंगी, तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, आई कैन आंसर दैट क्वेश्चंस टू यू. और हेजिटेट मत करो, जाना सीखो, बात करना सीखो, तो दैट विल रियली हेल्प यू. इवन येस्टरडे आई मेट वन पर्सन, वन स्टूडेंट ओनली. पर्सन क्या मतलब, मैं बताती हूँ. ही इज 15 years old, only 15 years old, and he's 15 years old and he is giving AI trainings. अभी मेरे पास उसका मतलब kind of card नहीं है. Yesterday he has given his card to me, and he is giving AI trainings, and his startup was in something agriculture, that I can tell you after like reading everything from that card which he has given. तो
these kind of things which I see, that then I feel like कि अच्छा, the India is growing, और हम AI जितना भी stuff AI की तरफ बात करें तो AI एक अच्छी तरीके में और अच्छे उसमें जा रहा है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि AI का डिसएडवांटेज भी है। वो मैं मानती हूँ कि AI का डिसएडवांटेज है, बट जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ या ऐसे बच्चों से मिलती हूँ स्पेसिफिकली, ही इज ओनली 15 years old, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 15 साल की उम्र में मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं ध्यान। But 15 years old, first of all, he's attending, he was in the event. Secondly, he was very much interactive and वो बता रहे थे कि I have a startup and I give AI trainings. मतलब 15 साल की उम्र में तुम खुद सोचो कि वो AI trainings दे रहा है। And if maybe he is watching that this live session, so I would love to talk to him, and I would love to like to get him on my channel to let you also know कि मतलब क्या कर रहा है वो, or if you are someone want to um, kind of start something of yours, so you can learn from him. That I have known to think. हाँ, वो तो देखो है, मतलब देखो, अगर मैं कल भी यही बात की थी, मैं आज भी यही कह रही हूँ। अगर इफ वी हैव 4 पीपल, और अगर उन चारों ही लोगों की स्किल्स, एसक्यूएल, सीक्वल, पावर बीआई या फिर क्या कहते हैं, यही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उस वजह से डेटा एनालिटिक्स फील्ड इज़ बिट क्राउडेड। और अगर उस उन चारों में से अगर किसी की स्किल या फिर किसी को और मतलब अच्छा करना आ रहा है अदर देन दीज, और किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, या फिर हाउ टू just with the help of analytical mind to solve such problem statement, or just to in journal a case study, or even if uh, solving a problem of a business, so that person is doing well, और उसको हम नहीं बोलेंगे कि that person is crowd in data analytics. But if you are just stick with your Excel, Power BI, SQL skills, तो still you feel that the data analytics field is crowded. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब डेटा एनालिटिक्स भी क्राउडेड हो गए। एक टाइम पे तो क्या कहते हैं, बीटेक भी सबको बहुत क्या कहते हैं क्राउडेड लगता था, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको बहुत क्राउडेड लगता था। तो ये ऐसे सैचुरेशंस और ये ऐसा क्राउडेड अनक्राउडेड एक काइंड ऑफ मतलब ओपिनियन रहता है। उसमें आपको होता है कि आप क्या अलग हटके कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बहुत ही रैंडम, काइंड ऑफ नहीं रैंडम, मतलब मैंने अपने चैनल पे अनाउंस करा था दैट वी विल बी हैविंग अ लाइव सेशन। तो अगर इन जर्नल भी किसी के बारे में आगे ने लाइक इन, एंड इवन सो मेनी पीपल आस्क मी लाइक हाउ आई डू कंटेंट क्रिएशन एज वेल। तो कंटेंट क्रिएशन जनरली कभी भी मेरी प्लेट पे नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगी, या मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी। ये है ओवर द टाइम, मैं जब लिखने गई और जब मैंने टेक इवेंट्स अटेंड करे, तो मुझे लगा कि अगर मैं अटेंड कर रही हूँ तो मैं फिर दिखा भी सकती हूँ ना लोगों को, तो दैट्स हाउ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड। तो इसलिए दैट्स हाउ यू बिल्ड, और दैट्स हाउ यू कैप्चर थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। क्वेश्चन यू कैन। हेलो। और अभी इस लाइव के बाद मेरा एक प्रॉपर ब्लॉग आने वाला है, कि जो मैंने कल एक इवेंट, टेक इवेंट अटेंड करा है, तो उसमें आई हैव मेट अ वेरी बिग पर्सनालिटी। और इवन जब मैं अपनी इंटरव्यू जर्नी में थी, जब मैं मशीन लर्निंग और ये सब की पढ़ाई कर रही थी, तो आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिज चैनल। सो yesterday आई showcase माई कंटेंट क्रिएशन और माई टॉक डेटा विद जैन चैनल टू हिम। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हु इज दैट पर्सन, और काफी लोगों ने उनसे भी पढ़ाई करी है। तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन है, और यू नो हिम और नॉट। सो यू हैव टू टेल मी, और इस लाइव के बाद वो वीडियो दैट वीडियो विल बी लाइव सून, तो उसमें यू कैन टेल मी। और अगर इन जनरल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा एआई, और अगर कहीं रिज्यूमे में अटके हुए हो, या फिर एज इन नौकरी ढूंढ रहे हो, और अगर किसी चीज में स्टक हो, तो you can drop our questions. Yes, there is also one thing which I want to address is that I see that influencers as in YouTubers, those who are asking money for resume review and LinkedIn optimization, I request you not to
fall in these kind of traps, because देखो आजकल AI can help you to review your resume better than a person. मैं ये बात बिल्कुल सच कह रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप में अगर तुम अपना पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, क्या क्या स्किल्स हैं तुम्हारे पास, कौन सी तुम जॉब रोल टारगेट कर रहे हो, तो उसमें AI, इवन अ चैट जीपीटी, क्लॉड, और इवन क्या कहते हैं जेमिनाई कैन हेल्प यू इन बेटर बेटर वे अदर देन अ पर्सन. तो मैं यही कहूंगी अपने 500 600, मैं कह रही हूँ अपने 10 रुपए भी प्लीज इस रिज्यूमे रिव्यू की वर्कशॉप्स में मत मत वेस्ट करो, rather than try to take a pro version of ChatGPT, or even or ChatGPT, or even you can ask ChatGPT like what more I can do on my resume, rather than wasting your money on 500 or 600 on a random influencers. क्योंकि likes, comments, subscription लेना आजकल बहुत आसान है. That is very very minimum thing that you can do. मतलब there are agencies, there are people who are sitting behind YouTube channels, क्योंकि you can get a you can get a subscribers, you can get likes also, you can get comments also, but it's very impossible to give quality to your people or quality of your content. आप एक एडिटर अच्छा रख लो, तो आप अपनी वीडियो फैंसी बना सकते हो, कट्स लगा सकते हो उनमें, अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लगा सकते हो उनमें, लेकिन अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो अपने ऑडियंस को, तो ऐसा कंटेंट क्रिएशन या फिर ऐसा किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने का कोई फायदा नहीं है. तो इसलिए प्लीज बी अवेयर ऑफ सच इन्फ्लुएंसर्स जो आपको खुलेआम पैसे मांगते हैं कि हम आपका रिज्यूमे रिव्यू करेंगे, और वो कुछ लोगों की फोटो लगा देते हैं कि हमने इनका रिज्यूमे रिव्यू करा है, क्योंकि वो लोग खुद ही इतने नाइब होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता. तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन सच रिज्यूमे रिव्यू और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आपका AI कैन डू अ बेटर थिंग रेदर देन जस्ट पेइंग सच मनी ऑन दिस स्टफ. अब कोई कहेगा कि नहीं AI सब कुछ नहीं कर सकता, बट for the first time or as a beginner you can consider AI to just review your resume, or if you have any specific job role in your mind, तो आप अगर AI को just ये भी लिख के दोगे ना कि प्लीज रिव्यू माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दिस जॉब रोल, तो वो भी आपका आराम से हो जाएगा rather than just paying a lot hell of money. Any other questions are welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पर्सन हु इज टीचिंग दैट स्टफ टू यू. हाँ, ये बहुत क्वेश्चन लोग बहुत काइंड ऑफ मिक्सअप करते हैं मेरे चैनल को लेके. मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ कि मैं आज सीक्वल के बारे में कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं एक्सेल के बारे में कुछ पढ़ा रही हूँ, या फिर इवन मैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में कुछ पढ़ा रही हूँ. मैं बता सकती हूँ कि ये इंडस्ट्री में ये चीजें हैं, तो ये तुम अपने आप पढ़ लो, बट मैं उन्हीं को पढ़ा नहीं रही हूँ, ना मैं पढ़ाना चाहती. I know it will helpful to audience, but see, listen, there's a perspective for this thing on my mind, or for people also. अगर जैसे मुझे किसी चीज की तैयारी करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पढ़ना है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक ऐसे पर्टिकुलर एडुकेटर से पढ़ूंगी जो मेरे माइंड में होगा, rather than I just listen to the person who is just starting their content creation. So that's why I always say that I am not a teacher on a YouTube channel, or I don't have a channel to teach people कि नहीं तुम एक्सेल में ऐसा फॉर्मूला लगा लो, या तुम डेक्स का ऐसा फॉर्मूला लगा लो, या तुम माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ये ऐसे कर लो. नहीं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं पढ़ाऊंगी, बट आई कैन सजेस्ट यू चैनल्स कि जहाँ से तुम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक या फिर एसक्यूएल या फिर एक्सेल पढ़ सकते हो, या फिर अपना रिज्यूमे रिव्यू कर सकते हो. आई कैन हेल्प यू इन दैट, कि मतलब वेबसाइट्स हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैंने खुद प्रेफर करे हैं, तो वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ. मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगी कि चलो आज हम एक्सेल पढ़ते हैं, या फिर एक्सेल पे कैसे पिवट टेबल्स लगाते हैं, या फिर चार्ट्स बनाते हैं. दैट्स नॉट माय forte, I would say that not my niche as well. I hope I have answered your question. एंड मैं मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन आपको किसी से किसी आती नहीं है कि मैं आपको सुबह से लेके शाम तक ये कहूँ नहीं आप भी करो, आप भी करो. जब आप सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं आएगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आर टू पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. अगर आपके अंदर खुद के अंदर नहीं है, तो नोबडी कैन टीच यू और नोबडी कैन लेट यू डू एनीथिंग. सो दैट्स completely one's perspective, and that's completely one's
inner self that push themselves to do this thing or not. अब जैसे अगर मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, तो मैं मेरे को कोई मोटिवेट थोड़ा ना करता है कि तुमको ये कंटेंट बना के ही लाना है, या तुमको वो मेरा सेल्फ पैशन है, या फिर वो मैं करना चाहती हूँ. सो दैट इज माय काइंड ऑफ अप्रोच, और दैट इज माय काइंड ऑफ पैशन, और यू वुड से thing, that thing I want to do. So I hope I have answered your question. क्योंकि मैंने कभी भी अपने चैनल पे पढ़ाया नहीं कि आओ हम एक्सेल पढ़ेंगे, या हम क्या कहते हैं पावर बीआई पढ़ेंगे. मैंने कभी पढ़ाया नहीं अपने चैनल पे. मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कहाँ से पढ़ो, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ा. अब जैसे मैं एक वर्कशॉप के बारे में बता रही हूँ, वो मैं खुद अटेंड कर रही हूँ, वो फ्री है. तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम भी वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि इट विल बेनिफिट यू. मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो वर्कशॉप दे रही हूँ, बट वो वर्कशॉप मैंने खुद से ढूंढी है, तो तुम उसको खुद भी अटेंड करके कुछ सीख सकते हो. सो दैट इज ओनली माई अजेंडा टू डू थिंग्स, और माई agenda of my channel basically. Any other questions are welcome if you have any question. Got it. Thanks for it. Always welcome, and thank you for supporting, and thank you for asking this question, because बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप पढ़ाती हो, या बेसिकली आपकी नीश क्या है आपकी चैनल की. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन मेड मी डू टू क्लियर माय नीश, और टेलिंग यू द appropriate thing that what I do specifically on my channel. और जो अगर आप मेरे जैसे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मतलब ओवर द पास्ट और लाइक 6-7 month or one year only I am doing this thing only. मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ. Thank you. I hope I have answered your question. Any other questions are absolutely welcome. Hello, hello, hello. Yeah, it's in my bucket list, but as of now, no, I'm not thinking. Even nowadays I am very much fascinated about like building through AI. कि मतलब जैसे the person which I told you about, like 15 years old. So I want to learn more about like how he is building. So I want to like my more focus is towards like how with the help of AI we can actually build websites, or we can actually build a product. So that is my kind of curiosity, or that is my kind of, you would say, कि जो मैं आजकल पढ़ना चाहती हूँ. And you can even also read about these things, or even yes, I'll tell you, कल पैनल डिस्कशन था, एंड इन दैट आई गॉट अ वेरी न्यू थिंग एज वेल. मैं बताती हूँ क्या था उसमें. मतलब इन बैंगलोर देयर इज वन ऐप, कि जैसे पॉट होल्स होते हैं ना, पॉट होल्स एज इन गड्ढे, जो रोड में आपको गड्ढे मिलते हैं. तो देयर इज अ पर्सन हु मेड अ काइंड ऑफ ऐप, कि अगर उस इंसान को कहीं कोई गड्ढा दिखता है, तो दैट पर्सन कैन इमीडिएटली स्कैन दैट पॉट होल, मतलब गड्ढा. एंड विद द स्कैनिंग दैट पर्सन कैन गेट टू नो कि इस जगह का एमएलए कौन है. और ही कैन फ्रॉम दैट ऐप, उस ऐप से वो बंदा फटाफट उस एमएलए को रिक्वेस्ट करके ये भी कर सकता है कि दिस पॉट होल इज डेंजरस, और इस पॉट होल को आप जल्द से जल्द के कहते हैं ठीक करवा दो. एंड इवन देयर इज सिस्टम ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, लाइक उस एरिया का पर्टिकुलर एमएलए दे हैव गिवन अ रेटिंग, कि अगर इस एमएलए की इतनी रेटिंग है या फिर इतनी कम रेटिंग है, तो उससे you can judge, or if you want, like there is a voting, so you can judge on that perspective, कि इस एमएलए ने कितनी जल्दी उस स्पेसिफिक गड्ढे को ठीक करा है, और व्हाट इज द रेटिंग ऑफ दैट एमएलए ऑन दैट स्पेसिफिक ऐप. तो ये भी मुझे कल ही पता लगा था. इस ऐप के बारे में मुझे अभी प्रॉपर्ली इसका नाम नहीं पता है, बट एक जस्ट ये एक स्टार्टअप ही है. तो ये बहुत ही कमाल का स्टार्टअप है. इफ यू आर समवन हु इज वांट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो ये आप एक आइडिया अपने वे में इनोवेट करके अपने लिए ट्राई कर सकते हो अपनी प्लेस पे. कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्लेस पे मॉनसून के टाइम बहुत ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं और लोग उसका कुछ करते नहीं है, क्योंकि वी हैव लिसन, और काफी न्यूज में आता है कि
जैसे सीवेज का भी हम कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं गड्ढे खुदे होते हैं तो लोग गिर जाते हैं उसमें, तो उसका भी हम उसको करके कर सकते हैं। तो इफ आई गेट द इंटायर स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई लव टू शेयर विद यू। बट थोड़ा थोड़ा जितना भी मुझे पता था, जितना मुझे कल पता लगा उसके बारे में, दैट आई टोल्ड यू कि मतलब ऐसा भी कुछ है, मतलब ऐसा भी कोई स्टार्टअप लोगों ने या उस बंदे ने अपना बना रखा है। maybe he has some personal story with that with that kind of thing, क्योंकि होता है कुछ कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उन रोड पे जो पॉट होल्स होते हैं उन चीजों से, तो मे बी ही हैज कम अप विद दैट प्रॉब्लम टू सॉल्व और मेड इनटू अ ऐप। एनी अदर क्वेश्चंस आर वेलकम। I have Power BI, SQL and हाँ, देखो अगर तुम्हारे पास पावर बीआई, सीक्वल और ये अब बहुत पुरानी स्किल्स हो गई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब तुम कहोगे मैं ऐसे बोल रही हूँ। बट अगर और कुछ नया पढ़ना है, जस्ट टर्म्स माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पढ़ सकते हो, पावर एप्स पढ़ सकते हो, और इवन यू कैन गो टू और लर्न एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री और एंटी ग्रेविटी, ये सारी चीजें काफी न्यू है मार्केट में, तो यू कैन लर्न अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। एंड now next this weekend I don't have any session or like any tech event. This weekend I have a very huge surprise which I will be revealing on Saturday maybe, so stay tuned to my channel for that, क्योंकि वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज which I want to share with you all, so stay tuned for that. And next weekend maybe I have some event, so for that also I will let you know. And everything, if you want to go to an event or if you want to know about an event, Talk Data with Jen is here to tell you about every event happening around you as much as possible. Jitna event mujhe pata lagta hai, I try to drop that video on my channel so that more and more number of people can join it, and more number of people can learn a single thing from that specific event as well. So everything is going very good. Thank you for asking. Hello, everyone. And now we are a family of 1072 subscribers. I majorly don't call it a subscriber. I just majorly call it my family. Those people who are supporting me, those people who are watching and engaging with my content. I really appreciate that. And trust me, I am so grateful for such things that happens to my life, or like in terms of content creation, in terms of my professional journey, personal journey. So I am extremely grateful for that. And when you have gratefulness in your life or in journal in a day, so your life goes very nice. So be grateful for whatever you have around. एंड आफ्टर द लाइव सेशन यू विल बी गेटिंग, अगर मैं अभी मैंने कल एक इवेंट अटेंड करा था, तो उसका एंटायर blog you can say, or entire thing like what we did in that session, like from workshop to panel discussion to quiz to giving goodies to my audience, so you can watch that entire blog after this live session. And even those people who are joined newly, if you are free uh, in the upcoming weekend, so you can learn about Claude, a free workshop which is completely free. Like with the help of Claude, you can learn about making PPTs, doing repetitive tasks, and how to automate your things. So if you want the link of that workshop, you can DM me here, or you can DM me on my LinkedIn or on my WhatsApp, or even on you can write a comment on any of my YouTube channel or any of my YouTube videos, sorry, and I can send you that link and you can register. And even it's free, it's not that you're paying something, it's completely free. It's a 3 hour live session workshop in which you can ask questions. If you stuck somewhere, you can ask um, the person who is giving the session, and it's completely free, so you must join it. And if you are someone who is
tired of making PPT, so with the help of Cloud, how you can make your PPTs easily. तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेना अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि मैं भी खुद वो वर्कशॉप ज्वाइन करूंगी। और इट्स अ फ्री वर्कशॉप, और क्या कहते हैं, कर लेना ज्वाइन, तुम्हारा ही फायदा होगा। आराम से सीखोगे क्लॉड से तुम्हारा, और तुम्हें क्लॉड के बारे में पता लगेगा कि हाउ यू कैन यूज क्लॉड इन मोर इफेक्टिव वेज। एंड ट्रस्ट मी, क्लॉड, पीपल आर सो अमेज्ड बाय क्लॉड, क्लॉड क्या क्या कर सकता है। सो फॉर अ जस्ट टू ट्राई, वर्कशॉप अटेंड कर लेना। Hello everyone. If you have any question in terms of data, AI, hello, I'm good. How are you? If you have any question in terms of data, AI, or even in journal also, one person was asking me like how I got to know about these events. First of all, I am very much active on LinkedIn. So if you are someone near around Delhi NCR, अगर तुम Delhi NCR में रहते हो, तो you can check out LinkedIn. वहाँ पे जर्नली आई पोस्ट कि आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट और आई एम गोइंग टू दिस इवेंट। तो आप उसके बारे में ज़रूर क्या कहते हैं, मतलब मेरा लिंक्डइन चेक कर सकते हो, और इवन मोस्टली आई पुट ऑन माय यूट्यूब चैनल एज़ वेल। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एआई फेस्ट के बारे में बताया था। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ थिंग। इफ यू आर अ फ्रेशर तो ए माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल फेस्ट इज़ एब्सोल्युटली अ बोनस पार्ट फॉर यू। मतलब उसमें यू हैव टू जस्ट कंप्लीट और यू हैव टू जस्ट लर्न, और उसमें आपको डीपी 600, डीपी 700 के फ्री वाउचर्स मिल रहे हैं। मतलब वो एग्जाम्स इतने कॉस्टली होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं, तो उसमें जस्ट आपको एक काइंड ऑफ रोड मैप कंप्लीट करना है एंड यू विल बी गेटिंग, और उसमें तुम्हें एग्जाम्स के फ्री वाउचर्स मिल रहे हैं। एंड आई गेस इट्स ओवर नाउ। इट वाज टिल 12th ऑफ जून, या फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने बताया था एक हैकाथॉन के बारे में। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एनरोल इन दैट और नॉट, क्योंकि मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं रहता कि क्या कहते हैं, मैं ना बताऊं। जो मुझे दिखता है फटाफट मैं उसको अपने चैनल पे बता देती हूँ, जिससे कि एटलीस्ट वन पर्सन गेट मोटिवेटेड, और एक एक बंदे एटलीस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हद से हद ज्यादा क्या ही हो जाएगा, आपको एक ना ही तो आ जाएगा, या हद से ज़्यादा आएगा जो आपको कोई मैसेज इग्नोर या मेल को इग्नोर कर देगा, बट पूछने में कुछ नहीं जाता। तो यू शुड आस्क इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, और इफ यू आर सीइंग दैट यू आर रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, टू ड्रॉप दैट मेल, ड्रॉप दैट मैसेज। डोंट हेजिटेट टू डू, नॉट टू डू इट। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इवेंट कैन add value to your life, to go to that event, register for that event, just go and just see कि exactly in events में होता क्या है। And if you are someone who is reaching out to someone, just reach out. Don't think the whether, don't think कि person reply करेगा नहीं करेगा, हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो नहीं करेगा या करेगा। दो ही चीजें होंगी, या तो होंगी या नहीं होंगी। तो इतना मत सोचा करो, just try to put your whole efforts. Python resources to learn. um Python resources to learn, Code with Harry is a channel जिससे मैंने भी Python काफी सीखा हुआ है। और क्या कहते हैं, even you can go to code basics as well, और Alex the analyst में क्या कहते हैं, वेब स्क्रैपिंग यू कैन लर्न फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो ये तीन चैनल है, कोड बेसिक्स, कोड विद हैरी, नंबर वन इज कोड विद हैरी, नंबर टू इज कोड बेसिक्स, नंबर थ्री इज एलेक्स द एनालिस्ट, जिसमें आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो वो, these are my resources to learn Python. Hi, hello, hello. Any questions are welcome if you have your mind. Any questions are welcome. This basically this live just to welcome, because many people joined my channel. So this live session was just to welcome them all, and just to say that thank you, welcome, thank you. In general, अगर कोई भी question है, you can ask me. Hello, hello. And if you haven't watched my Google Cloud Summit wala video, so you can go and watch it. And even I have given an interview as well. अब ये नहीं पता मुझे वो इंटरव्यू आएगा कब या नहीं आएगा, बट आई हैव गिवन, मैंने अपना काम कर दिया। अब गूगल के ऊपर है वो इंटरव्यू डालें या नहीं डालें, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड दैट वाज फन। पता है, मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ।
I went uh, I went there with my friends, and we were just sitting, and we were just I was just capturing them because they was I asked some question from them, and I was just capturing them. So somebody from the Google, which Google hired them to just record the entire event. So they came to us with my friend of group to ask like if we can give bites, or like how we find about the event, how was that experience. So that's how we landed to go to that interview, and we spoke whatever we learn about in that session, or what was our experience. तो ऐसे सब करते रहना चाहिए। और अब ये मत सोचो कि मैंने क्या कहते हैं अब दे दिया है तो अब कब आएगा या क्या नहीं है, जब आएगा आ जाएगा। थैंक यू सुपरनोवा, थैंक यू। कैन यू प्लीज हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट? हाँ, तो दैट इज लाइव, दैट इज ऑन माय चैनल, आई कैन शेयर यू द लिंक। और नहीं तो जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाया था, विक्स एक वेबसाइट है, उससे बना सकते हो, कैनवा पे बना सकते हो, और इवन यू कैन यूज एच टी एम एल ऑल्सो। उसमें भी आप थोड़ा सा विदाउट कोडिंग आप अपना क्या कहते हैं वेबसाइट बना सकते हो फॉर लाइक बिल्डिंग प्रोजेक्ट और ऐसे करके। बट माय फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी विक्स, WIX। उसमें जस्ट आप कस्टमाइज टेम्पलेट होते हैं, उसमें आपको जस्ट लिखना होता है थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से। उसमें यू कैन ऐड योर रिज्यूमे, और इन जनरल व्हाट यू डू, और व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स you have done, and your basic LinkedIn, GitHub, or if you have any other things to put on your resume। और Canva में also you can make, Canva में भी there Canva में भी टेम्पलेट होते हैं, उनको आप you can modify और उनको आप edit कर सकते हो। तो ऐसे आप बना सकते हो अपनी पोर्टफोलियो फॉर प्रोजेक्ट्स। और इवन मैंने अभी एक रील भी देखी थी, उसमें that person was actually speaking, and his portfolio was going on like his resume, or like project portfolio website was. So that you should also, you should try, or you can try for that specific video if you want. Any other videos, any other questions are welcome, welcome. I hope I have helped you. Thank you so much. Thank you. Please, how to showcase Power BI dashboard other than Novi Pro? हाँ, उसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डाउनलोड दैट स्पेसिफिक रिपोर्ट। और क्या कहते हैं अगर देखो तुम्हारे पास पावर बीआई का प्रो नहीं हो तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप और स्पेसिफिक नहीं कुछ क्या कहते हैं ऑप्शंस यूज कर सकते। अदर देन दैट यू कैन, हाँ यस, यू कैन यूज मेवन एनालिटिक्स ऑल्सो, जहाँ पे आप अपना खुद, क्योंकि वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, अपने रिज्यूमे चैलेंज निकालते हैं, तो आप उसको भी ट्राई करके कर सकते हो, अपना पावर बीआई प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। और इवन व्हाट यू कैन डू, कि आपने पावर बीआई में एनालिसिस कर लिया है, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन शोकेस टू द पर्सन, और यू कैन शोकेस टू द हायरिंग मैनेजर अबाउट योर पावर बीआई प्रोजेक्ट। क्योंकि जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं या जब हम एक लर्निंग जर्नी में होते हैं, तब हमारे पास पावर बीआई का अपग्रेडेड वर्जन नहीं, अपग्रेडेड एज इन सब्सक्रिप्शन नहीं होता। तो द वन ऑप्शन व्हिच इज लेफ्ट विद अस इज नोवी प्रो। तो उसमें ही जर्नली मैंने भी अपने पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स पब्लिश करे थे, और इवन मेवन इज आल्सो देयर, तो उसमें आप कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस आर वेलकम। हेलो, एनी अदर क्वेश्चंस आर वेलकम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो मेरे से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल भी पैनल डिस्कशन में नीतीश सर यही कह रहे थे कि टूल के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के पीछे भागो, कि मतलब तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो बेसिकली। और देयर इज अ वेबसाइट एज वेल, आई डोंट नो दैट वेबसाइट नेम, बट where you can
गेट द प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि वहां पे सब अपनी प्रॉब्लम्स पुट ऑन करते हैं, मतलब बिजनेसेस द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, सो दे पुट दैट प्रॉब्लम देयर, बट आई डोंट नो द नेम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट वेबसाइट, बट ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज कर सकते हो, और आप अपने आप उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप अपने रिज्यूमे में पुट ऑन कर सकते हो, जिससे कि यू कैन tell to the hiring manager that I was working on this problem and this is how I have solved a specific problem. So टूल्स के पीछे मत भागो, क्योंकि टूल्स जैसे पावर बीआई का पहले बहुत डिमांड था कि एवरीबडी इज लर्निंग पावर बीआई, एवरीबडी इज लर्निंग पावर, बट नाउ द पावर बीआई मार्केट इज बीइंग सैचुरेटेड, मतलब पावर बीआई का अब काफी जॉब, मतलब काफी रिज्यूमेस, नोबडी इज हायरिंग फॉर पावर बीआई डेवलपर. So that's how tools are for specific or limited time period. But if you have skills like analytical skills, problem solving skills, team building skills, or kind of, you can say, learning from one or jumping from one tool to another, so that will help you, that will help you to build a successful career rather than just learning tools. तो यही मेरी एडवाइस होगी कि टूल्स के पीछे मत भागो, और इससे सही है कि स्किल्स के पीछे भागो, कि मतलब एआई से कैसे आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, या फिर हाउ एआई कैन हेल्प यू in terms of building stuff or in terms of getting helpful with the help of AI. So that should be the approach rather than just learning tools. That is what I feel, and that is what experienced people are saying. Means kal, if in the panel discussion everybody was talking about कि which like AI is coming or every advancement is coming, like अब तुम अभी तुम सोए हो 2 सेकंड बाद ही तुम्हें AI का कोई नया अपडेट मिल जाता है, तो इससे बढ़िया है कि टूल्स के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो कि तुम क्या स्किल्स कर सकते हो इम्प्रूव. ऑलवेज वेलकम. Thank you for asking such questions, because these questions are really very helpful in terms of getting or telling my perspective, or in generally talking on my life. So thank you for asking such questions. I really appreciate that. Thank you so much. And if you are someone who wants to join that workshop, just DM me on any of my YouTube video, or on my LinkedIn channel, or on my Instagram as well, so that I can share the details of that workshop with you. And it's a free workshop, it's a 3 hour live workshop. And with the help of Claude, you can learn plenty of things. And I will also be joining that workshop. So if you want to, you can. And if you want the link of that workshop, I can put in the description, or I can put in the chat box. So if I can comment, so I guess I cannot comment. ऐसा कुछ है क्या? Didi, on which topic is your channel? So my channel is basically telling freshers about the tech events happening around them, basically, or conferences around them in Delhi NCR, and basically capturing what exactly happens in the tech events or AI events or any workshop, or even a panel discussion as well. So my channel is about that only. And I'm not a teacher, as I already answered that question. So that is the niche of my channel, or the that is my channel, or that is the topic of my channel. Hello. I hope I have answered your question. या मेरे को ना ऑप्शन नहीं आ रहा कि आई कैन पुट अ कमेंट, तो इसलिए आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू पुट अ कमेंट. बट अगर तुम्हें उस वर्कशॉप का लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अपनी पोस्ट में या फिर उसमें डाल दूंगी, सो यू कैन एनरोल. देखो भाई, मेरा कुछ इसमें वो नहीं रहता है, मैं जो फ्री चीज मुझे वैल्यूएबल लगती है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, और जिससे कि तुम भी सीखो, मैं भी सीखूं, हम सब सीखे मिलके. तो इसलिए अगर वो वर्कशॉप, my hobbies right now is to be more better in communication skills, and to learn more about AI, to read more about AI, and to read more books. So that is my hobbies right now.
अभी मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं कमेंट कर सकती हूँ या फिर मतलब मैं कुछ वो डाल सकती हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट एआई राइट नाउ? एआई राइट नाउ मतलब फेवरेट एआई कैसे, मतलब ये तो ये वाली बात हुई, फेवरेट चैनल बताओ अपना। फेवरेट एआई कुछ नहीं है जो मेरे को सही रिस्पॉन्स दे दे मेरा मेरे प्रॉम्प्ट का, दैट इज मतलब फेवरेट एआई। मतलब कुछ लोग अगर जैसे पर्सपेक्टिव है, कुछ लोगों को चैट जीपीटी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जेमिनी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को क्लॉड अच्छा लगता है। तो ये है कि जो आपका बेटर आउटपुट दे दे और जो आपके प्रॉम्प्ट को ज़्यादा जल्दी समझ ले, दैट इज़ द फेवरेट एआई आई शुड टेल। कभी-कभी चैट जीपीटी मेरा आंसर बहुत अच्छा देता है, कभी-कभी क्लॉड मेरा आंसर बहुत अच्छा दे सकता है देता है, या फिर कभी-कभी कुछ मुझे कुछ कंटेंट वाइज़ या फिर वैसे हैं तो मुझे जेमिनी बहुत अच्छा आंसर देता है। तो स्पेसिफिकली दैट इज़ द फेवरेट एआई ऐसे करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली। हैव यू एवर मतलब मतलब कभी सोचा है कि द थिंग व्हिच इज़ आर्टिफिशियल हाउ इट कैन बी इंटेलिजेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो मे बी मैंने सोचा तुम्हारे भी दिमाग में आता होगा। तुम्हारे दिमाग में वियर्ड क्वेश्चन आते हैं, मेरे दिमाग में तो बहुत वियर्ड क्वेश्चन आते हैं। हम मशीन्स को सिखा के ही उनसे काम करा रहे हैं, तुम्हें पता है? दैट इज एग्जैक्टली फन। तो कब एआई स्टार्ट हुआ पता है? ऐसा नहीं है एआई अभी बूम हुआ है, एआई बहुत पहले से। पहले लोग कहते थे कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अब लोग कहते हैं एआई आ जाएगा तो क्या कहते हैं जॉब्स खत्म हो जाएंगी। बट there are reports those are saying that if AI will be there, so there will be lot more jobs. तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है एंड देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल कि एआई आएगा तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो वी आर डिफरेंट पीपल, वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू टेल कि people have different perspectives, but yeah, right, it will create more opportunities, right, exactly। तो डरो मत एआई से, अपना पढ़ते रहो, अपने आर्टिकल पढ़ो। मतलब जैसे अभी मैं रिसेंटली आई हैव मेट विद अंश मेहरा। लाइक अगर तुम उसके सब्सक्राइबर्स हो या तुम उसको फॉलो करते हो तो उसने भी यही बोला कि हम अपने माइंड को इतना ज्यादा एआई में फोकस्ड कर चुके हैं ना कि हमारा रीड और राइटिंग स्किल्स बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि जस्ट इन जनरल अगर तुमको रैंडमली एक ईमेल भी लिखना है, तुम सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाते हो कि राइट एन ईमेल और स्पेसिफिक। तो उसके लिए तुम्हें अपने पहले दिमाग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल हेल्प यू और दैट विल give you a chance to learn more about or having your brain to use. So any the person who it's himself teaches AI, so that is his advice and that is live on my channel as well ki we have so much complicated with AI, but we are not able to read and write process things that are complicated. So read and write things or पढ़ो चीजों को, then you will be getting a more understandable perspective of things. Any other questions are welcome. I am here for more 10 minutes, I would say. And now we are a family of 1072, and I am very grateful for everyone. Those who engage, those who comment, those who have subscribed to my channel. Thank you so much. Any other questions are welcome. If you have any question related to AI, data, or even in journal, also you can ask me. मेरे को वो वर्कशॉप का लिंक डालने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट फुटबॉल, क्योंकि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सॉरी, आई एम आउट ऑफ दैट टॉपिक। मुझे क्रिकेट के बारे में यू कैन आस्क एनीथिंग, बट फुटबॉल आई हैव नो आइडिया, सॉरी। फुटबॉल में मैं किसी को नहीं जानती।
I can only, or I have a particular thing to like I can say about cricket, but I don't know anything about football. So I'm so sorry for not answering your question. Or even you can also tell me some new advancement happening in AI. और अगर तुमने कुछ नया पढ़ा है तो उसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो. हेलो. अभी मैंने कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि यूट्यूब वाज क्रैश्ड एंड इंस्टाग्राम वाज क्रैश्ड. तो मे बी दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू पुट. पता नहीं, चलो कोई नहीं. हेलो. हेलो. सो हाँ, दिस वीकेंड we have no, after this live you will be my on my channel you will be seeing a blog. Like recently I've attended a tech event, so in that what workshops, what panel discussions, and what kind of questions people asked, and goodies by Talk Data with Jen. So you will be seeing that video on my channel after the live session, so do watch it out. And there's a surprise as well. I met a वेरी बिग यूट्यूबर. आई होप तुम सबने भी उन यूट्यूबर के बारे में कभी ना कभी तो तुमने पढ़ाई करी होगी, क्योंकि ही इज वेरी फेमस. एंड इवन आई शोकेस माय टॉक डेटा विद जैन टू हिम एज वेल. आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर ऑफ दैट आल्सो. तो वो जाके तुम सबको देखना है, जरूरी है वो देखना. थैंक यू. समटाइम्स ये भी बहुत मैटर करता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं, कि मतलब आर दे सपोर्टिंग यू और आर दे आर नॉट सपोर्टिंग यू. बट जेन्युइनली भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आई हैव गॉट अ वेरी 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 सपोर्टिव पीपल अराउंड मी. मतलब इफ आई एम डूइंग समथिंग, कभी कभी होता है, हमेशा आप नहीं सही होते, तो दे सपोर्ट मी, दे टेल मी हाउ आई कैन डू थिंग्स, हाउ आई कैन इम्प्रूव थिंग्स इन टर्म्स ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन और इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग. तो दैट ऑल्सो मैटर्स. जैसे कहते हैं ना कि कंपनी बहुत मैटर करती है, कंपनी एज इन विद whom you live और with whom you talk in general, so that matters the most. So I am very grateful for my friends. Hello. Hello, hello, hello. And if you're someone who is a teacher as in who teaches Power BI, SQL, Excel, Microsoft Fabric, Azure, Databricks, so do DM me, because maybe I have opportunity for you. So you can DM me on my Instagram or on my LinkedIn channel. एंड इफ यू हैवंट फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल, जाओ जाके फॉलो करो, क्योंकि उसमें ही सबसे पहले आए पुट अ अपडेट. हाय. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. जब आपके घर वाले आते हैं ना आपके लाइव के सेशन में तो आपको बहुत अच्छा लगता है. धन्यवाद आपका आना. और अगर आपको, अच्छा आपको कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको कहते हैं कि अरे आप तो क्या ही कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कैसे ही होगा. मत सुनो उनकी बात. अगर कंटेंट क्रिएशन करना है तो करो, खूब करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो. बट ऐसा कंटेंट क्रिएशन करो कि एटलीस्ट यू आर एडिंग वैल्यू टू द ऑडियंस. मतलब अगर इफ आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन, तो have think have thinking in mind is like if I am putting value to someone's, I would say, screen time, that will help you. Any other thing is welcome if you want to ask anything, anything.
Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Any questions about data, AI, or in general also you can ask. And if you are someone who is want to learn Claude, how to make PPT or how to make do your things repetitive work easily, so you can join a workshop, live workshop, and it's a free workshop. It's not a paid workshop, so you can join it. So if you're new to my channel, and I will tell you what I do. So I am a data analyst and in edtech, and that's my professional work. Other than that, as a part time, I am a content creator on LinkedIn, YouTube, and Instagram. And on weekends, I generally attend tech events, workshops, or even I love to interact with people, learn about people, like what they're doing in their life, in a professional journey or in their personal journey, or if they're building something through AI. So that is what I do uh, in in free time or in part time. Sorry, in part time or in professionally. So that is what I do. I hope I have answered your question. If you have any other question, you can ask in the chat section. And I am not able to put the link of that workshop. Or if you want that workshop link, just to let me know. I'll try to put on my YouTube channel after this live session, so that maybe that can help you. And I always tell things that, see, basically it's a channel that from which you can learn is that, first of all, if you want to transition into data, or if you want to journally learn about AI, or if you want, or if you're curious to learn um, any, or if you are keen to attend any kind of tech event or any kind of AI event or workshop around you in Delhi NCR. So this is from where you can get an update. So this is exactly the agenda, and this is exactly you can learn from my channel. Hello. Okay, thank you. Welcome. I hope I have answered your question. Yes. Welcome. Okay, I will be live for more 5 minutes. If you have any question, so you can ask anything if you want in journal, you can ask. And you can also tell me from where you are joining in the live session. And after this live session, you will be uh, yesterday I've attended a tech event, so that video will be live on my channel, so you can attend, you can watch that video. Maybe it can motivate you, or it can help you to attend the next event which is happening in your place or in Delhi NCR, so that you can also find, or you can also build something related to AI, or just in general you can find your mentor, you can find your investor as well. Or if you have a great idea but you're not able to find an investor, to the person who can invest in your idea, so you can find that person at a tech event or at a conference. Or even if you are an instructor, or if you want to learn something, so you can find that person next in your event, or in any tech event, or AI event, or if you're building something. So this is how these tech events, conferences are important.
Okay, I will be live for 5 minutes more. Then we'll wrap up the session. And I want to thank everyone who joined this live session. Thanks a lot. That means a lot. And I really appreciate you guys, because without you, my channel is nothing. And the engagement, the content, the likes, comment, and even if you give me a feedback as well on my channel, that I really appreciate a lot. And stay tuned to my channel. I will be coming up more uh, updates about the tech events it's happening around you, Delhi NCR or nearby. Or if we are as a community, I would say, मैम डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहिए. See, if you are if you have interest in numbers, stats, machine learning, so you should definitely try data analytics. It's not a bad field, but your roadmap, your mind should be clear. Like if you want to, or if you uh, generally want to do it or not. मतलब अगर करना चाहते हो तो करो, जस्ट कि अगर सब कर रहे हैं इसलिए मत करो. अब तो डेटा एनालिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. यू कैन बी अ जेनआई इंजीनियर, यू कैन बी अ डेटा इंजीनियर, यू कैन बी अ cyber security analyst, or you can be a blockchain also is also a very good field. So you can also explore these kind of fields. That is a good question. For improving communication skills, you have to first remove that thinking of your mind that somebody will judge me, because I am also a person, or I am also a kind of person who sometimes hesitate to speak, who sometimes not able to pronounce a single or a easy word. But that time I do not, or that the moment I do not stop, next time I try to improve that thing. और उसके बाद I feel like okay, this time I have not done that the way I want to do. Next time I will be doing that thing more perfect, I would say. Or I You have to keep practicing with people, or you have to keep practicing with yourself to be good at communication skills. And do not think that you are not able to speak, or people will judge you, people will mock you. Eventually they will, but you should be very much self confident that if I am speaking something wrong today, maybe 2 days or 3 days later I will be speaking correctly, or if I will be improving on my things. So this is how you can improve your communication skills. Talk with people, or even talk with yourself, or even if you're not able to communicate properly at once, so you can write your thoughts and then you can communicate. So over the time you will be able to be good with communication. Yeah, I am good at maths and stats as of now. And then should I start looking? Yes, you should start looking for internships. As मैं जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ कि do not wait for the perfect time for the interview. If you have uh, basic knowledge of tools, just try to give the interviews. कि हद से हद ज्यादा क्या ही होगा, you will be get rejected, और you will get a chance to see कि मैं कहाँ improve कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So this is how you will be learning, or this is how you will be getting at the right opportunity. तो इसलिए don't wait for the right time to sit in an interview. क्योंकि एज एन आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, मैं को राइट टाइम या फिर राइट अपॉर्चुनिटी जैसे अभी मैं अटकी ना अपॉर्चुनिटी में, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से बोलूंगी. तो दिस इज हाउ यू लर्न टू कम्युनिकेट थिंग्स. तो मैं कोई राइट अपॉर्चुनिटी या फिर राइट टाइम नहीं देखती अपना लाइव सेशन करने के लिए. तो ऐसे ही यू हैव टू सिट whenever you see an opportunity, or whenever you see like okay, I am 50% eligible to give an interview. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि no, you are not 50% also, then don't waste that opportunity. So I hope I have answered your question. Any other question if you want to ask?
Thank you so much. Do tag us on social media and stay tuned to our Indian Data Club LinkedIn channel as well as Instagram channel for all the updates for all the future events. And super soon we will be doing another event for you all in which you come up with your questions, you come up with your doubts, and whatever questions you have in your mind, come up with that, because Indian Data Club supports each other. Indian Data Club believes in walking equally rather than just a one person, because it's a club which is one club with many voices. So thank you so much for joining us tomorrow. Join us for more other upcoming events. Ma'am, how should I what is it? So that video is live on my channel, like how you can ask a working professional for a referral. First of all, referral तभी लो जब you feel like you are ready. मतलब अपना उस referral को waste मत करो. Till the time you can give interviews just for trial. अब तुम्हें अगर लगता है कि उस इंटरव्यू में यू हैव डन बेटर जॉब, देन यू कैन आस्क फॉर दैट रेफरल. तो ऐसे यू कैन यूज दैट रेफरल. रेफरल के लिए व्हाट यू कैन डू, बिल्ड engage with their content and just randomly don't ask for the job. पहले कुछ कनेक्शन बिल्ड करो या पहले बातचीत करो, देन यू कैन आस्क फॉर, देन यू कैन टेल देम कि आपकी कंपनी में ये जॉब है, ये मैंने देखी है, दिस की जॉब आईडी है, आई हैव दैट पर्टिकुलर स्किल्स, कैन यू जस्ट रेफर मी. सो उस वीडियो के लिए यू कैन गो टू माय चैनल एंड चेक. ओके, no more questions. I think I have answered every question. If कोई question छूटता है तो I am so sorry. We will be doing this live sessions more often on my channel. So stay tuned to Talk Data with Jen. And thank you so much for supporting. And I really appreciate everyone, every question, every comment, every like, every subscriber on my channel, because if you guys are there, that's why Talk Data with Jen is there. And yes, that's all from my side. And if you're someone who want to join that workshop around cloud, how to build presentation, how to do automated work, it's on 21st of June 8 p.m. and it's free of cost. So you should try it. And because I am also joining that workshop, so you should definitely try that workshop. और अगर तुम्हें उसका link चाहिए, you can DM me. और बस यही था जो मुझे आज बताना था. काफी देर तक हो गई है लाइव. ठीक है, दैट्स हाउ यू इंटरेक्ट एंड दैट्स हाउ यू आंसर द क्वेश्चंस. Till then, keep learning, keep growing, and subscribe to Talk Data with Jen. And yes, bye. We'll meet in the next live session. Okay, bye everyone. Thank you so much. आई एम रैपिंग अप द लाइव सेशन. और इस लाइव सेशन के बाद एक वीडियो आने वाली है. उसमें देयर इज अ छोटा सा सरप्राइज विच यू हैव टू सी एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दैट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, सब्सक्राइब टू